यूनिट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी स्टोरीज अबाउट पीपल हु वर लॉस्ट इन अनहैबिटेटेड प्लेसेस एंड वर लेटर रेस्क्यूड, नेम देम। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, यू कैन यूज एनी 3। फर्स्ट है एरॉन रेल्स्टॉन, an American outdoorsman who was trapped by a boulder in a canyon in Utah and later rescued. Second example है Juliana Koepke, a German Peruvian woman who survived a plane crash in the Peruvian rainforest and was later rescued. Third example है California born Juana Maria survived on an island with no other companion from 1835, was later rescued in 1853. And fourth example है a Scottish author Robertson along with his family members were lost while they were shipwrecked in Pacific Ocean by dangerous whales and managed to survive on their small boat and was later rescued after 38 days. Second question है think of one of your favorite interesting stories and fill in or draw an outline chart like the one shown below. Title of the story, आपको एक टाइटल देना है स्टोरी का, देन आपको एक एक करके जैसे यहाँ पे चार्ट बना हुआ है एक एक सीन डालना है. राइट एज मैनी सीन्स एज देयर आर इन दी स्टोरीज. एंड सेकेंड पॉइंट है मेनी टाइम्स द क्लाइमेक्स इज नियर द एंड, अ फ्यू स्टोरीज एंड विथ अ क्लाइमेक्स टू अचीव ग्रेटर इफेक्ट. एंड थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मीनिंग ऑफ एंटी क्लाइमेक्स. तो हमें यहाँ पे एक स्टोरी बतानी है और एंटी क्लाइमेक्स का मीनिंग बताना है. मैंने आपके लिए एक स्टोरी बनाई हुई है, वो मैं आपको दिखा. क्वेश्चन का आंसर, टाइटल है एडवेंचर विथ फ्रेंड्स. इसमें हम 1 2 3 4 को सीन 1 सीन 2 सीन 3 ऐसे समझ सकते हैं. सो सीन 1 है वंस देयर वर 3 फ्रेंड्स नेम्ड सूरज, अरुण एंड किरण. ऑन अ समर हॉलीडे दे आर फीलिंग बोर्ड and decided to go for a walk in forest. Entering the forest, they experience the exotic beauty of the forest and suddenly Suraj discovers a big hole near a stone. The 3 friends jumped into the hole and saw there were 6 tunnels under the hole. After several hours of walking, they suddenly saw a giant-sized bear. Seeing them, the bear started to rush towards them. They were scared too much but somehow gathered courage and tricked the bear and managed to escape from it. They entered deeper, started to fear wild animals in the forest as it became night, but they kept moving. Walking in the forest, they found a boy. They asked the boy the name of the village, but the boy was speaking in a different language. But Suraj understood his language and figured out that they were in the western part of the country. Suraj asked for the nearest bus stand, took a bus from there, and reached their house safely. They told their adventurous journey to their friends, and everyone was amazed to hear their story. तो ये आपका है एडवेंचर विथ फ्रेंड्स. अभी उसमें एक क्वेश्चन था एंटी क्लाइमेक्स. व्हाट इज एंटी क्लाइमेक्स? Anticlimax refers to a disappointing end to an exciting or impressive series of events or story. Third question है divide the class into groups of 4 to 6. Each group selects for itself one of the difficult situations listed below. Each group imagine themselves to be in that situation. तो यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें क्लास को 4 to 6 के ग्रुप में डिवाइड करना है. हर ग्रुप को एक एक सिचुएशन मिलेगा और उस सिचुएशन में क्या करना है ये हम देखते हैं. आपका फर्स्ट सिचुएशन है मरून्ड ऑन एन आइलैंड. सो अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स आर मरून्ड ऑन एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ओशन. तो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स एक आइलैंड पे फंस गए हैं मिडिल ऑफ द ओशन में, यानी ओशन के बीच में. सेकेंड है आपका लॉस्ट इन द फॉरेस्ट. अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स वॉकिंग थ्रू अ थिक जंगल हैव लॉस्ट देयर वे. पिलग्रिम्स यानी कि जो यात्री होते हैं जो मंदिर वगैरह जाते हैं उनको हम पिलग्रिम्स बोलते हैं. वो एक जंगल में फंस गए हैं. एंड थर्ड है स्ट्रैंडेड ऑन द हाईवे. अ टीम ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एन ऑफिस हैव गॉट डाउन एट द रॉन्ग प्लेस ऑन अ हाईवे एट नाइट. इट इज अ लोनली स्पॉट. तो इसमें ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं और एक गलत जगह पे वो पहुंच जाते हैं और वो एक बहुत ही
लोनली स्पॉट है मीन्स कि वहां आसपास कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है हेल्प के लिए. सो इन सिचुएशंस को हमें डिस्क्राइब करना है 4-5 सेंटेंसेस में कि हमारा सराउंडिंग कैसा है. ये देखिए, डिस्क्राइब देयर सराउंडिंग्स इन 4-5 सेंटेंसेस. राइट द रिएक्शन ऑफ द कंपेनियंस यूजिंग एक्सक्लेमेशंस, यानी कि हमें जो लोग फंसे हुए हैं उनके रिएक्शंस को 1-2 सेंटेंसेस में कैप्चर करना है विथ एक्सप्लेनेशंस, यानी कि एक्सप्रेशन वाले मार्क्स. थर्ड है यूजिंग योर इमेजिनेशन, राइट व्हाट इज द ओनली रे ऑफ होप फॉर देम, यानी हमें खुद इमेजिन करके यानी कल्पना करके बताना है कि हमारे लिए या जो फंसे हुए हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उम्मीद का कारण क्या हो सकता है. एंड फोर्थ है, 2 members of the group are going out to try to get help. They can take any 5 things with them. Write what they chose and why they chose it. So 2 लोग जो हैं वो वहां वापस जा रहे हैं, वापस या बाहर जा रहे हैं हेल्प के लिए. वो क्या 5 चीजें अपने साथ कैरी करेंगे और क्यों करेंगे. फर्स्ट सिचुएशन का आंसर देखते हैं. फर्स्ट सिचुएशन है मरून्ड ऑन एन आइलैंड. तो हमें डिस्क्राइब करना है कि हमारा सराउंडिंग कैसा है. तो यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो मैं आपको बताती हूँ. टाइनी आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड है. ओनली वाटर ऑल अराउंड विद डेंस फॉरेस्ट ऑन द आइलैंड. वाटर इज सॉल्टी, कैन नॉट बी ड्रंक, बट स्मॉल फ्रेश वाटर लेक ऑन आइलैंड. मेनी पाम ट्रीज एंड सैंडी वाइड बीचेस. सो ये डिस्क्रिप्शन है, मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक आइलैंड पे फंसे हुए हो तो आसपास आपको क्या दिख रहा है. अभी रिएक्शन कैप्चर करने विद एक्सप्लेनेशन मार्क. ये है, oh no, there is no one around and no network on mobile. How can we get the help and survive till then? Then somebody else says, oh look, there are plenty of fruits and a lake of drinking water. और यहाँ पे explanation mark है. The only ray of hope क्या है? An island at a distance where flights take off and land, indicating a city nearby. मीन्स हमें आइलैंड के ऊपर से एरोप्लेन जाता हुआ दिख रहा है तो हमें पता पड़ रहा है कि आसपास कहीं पे कोई सिटी है और दूर में हमें एक आइलैंड भी दिख रहा है. 5 आइटम्स जो लोग जाएंगे हेल्प के लिए वो क्या कैरी कर सकते हैं अपने साथ. सम फूड, फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, a flare gun for signaling if they are again stuck somewhere, and some extra dry clothes. Second situation है lost in a forest. तो आप अपनी सराउंडिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे. There are huge trees with so many leaves. There is barely any sunlight at the bottom. We can hear many queer noises. There seem to be thousands of creepy, crawly insects and birds. What if there are poisonous snakes? Dangerous carnivorous animals? So this is the description of the jungle. Now reaction कैसा होगा. So there are 2 girls stuck there. One is saying, ouch, what is that? Said Minnie. Other girl, Lovely, said, oh my god, are there tigers and lions here? So this is something which they are communicating. Then Minnie says, someone please save me. Now what is the ray of hope? यहाँ पे उम्मीद क्या है. The probability of return of the guide before the sun went down. He would then take us to our camp, which was safe haven, with boundary walls and guards. So वो खो गए हैं बिकॉज उनका गाइड खो गया है एंड उनका रे ऑफ होप है कि गाइड वापस आएगा और उनको उनके कैंप में जहां पे बाउंड्री वॉल्स और गार्ड्स हैं वहां पे लेके जाएगा ताकि वो जानवरों से बच सके. नाउ व्हाट आर दी 5 आइटम्स विच दे विल कैरी व्हेन दे आर गोइंग आउट फॉर हेल्प, यानी वो अपने साथ क्या कैरी करेंगे जो हेल्प लेने के लिए ग्रुप से अलग होंगे. लैंटर्न्स इन केस इट गेट्स डार्क, वो before they can get help, stout kits to protect themselves from animals, and food and water to keep themselves from starving, whistles to tell us where they are, and compass to guide the way. Question है stranded on the highway. तो आप अपने सराउंडिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे.
A team of players from an office have got down at the wrong place on a highway at night. It is a lonely spot. There is incomplete construction, road ended to a forest, and we tried going back, but it was then just an open field with no lights. अब इस पे रिएक्शन कैसा होगा? Oh God, where are we? It's okay, let's keep trying. We will get there. Ray of hope क्या होगा? While searching for road, we heard a siren signaling a human presence nearby. 5 items जो carry करेंगे people who are going to get the help, those are a torch to see the way, a mobile phone, a power bank, a water bottle, and a reflective vest for visibility from distance by passing cars. Questions written on the margin of the chapter story. तो आपके चैप्टर के साइड में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये उनके आंसर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज अ वर्क ऑफ फिक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ फैक्ट? आंसर है, इन अ वर्क ऑफ फिक्शन द रियलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स इज स्ट्रेस्ड to a certain extent, while a fact file is based completely on reality. A work of fiction is based on the writer's imagination and might stray away from reality, but the fact files are based on truth and have indeed happened or existed. Means fiction जो होता है वो imaginary होता है और fact जो होता है वो actually में जो हुआ है वो होता है. Second question है, how did the family reach the tropical island? Answer है, the family reached tropical island by boats which they constructed out of the tubes. They filled these tubes with food, ammunitions and all other articles of value which they could carry safely and then rowed towards the island. Third question है, why did mother wanted to shift the family to a tree house? Answer है, mother wanted to shift the family to a tree house because their current camp was not only exposed but also very dry and hot. She wanted a house that would be safe from jackals and other wild animals. Next question है, what was the third place the family decided to reside in? Where did they wish to shift? Why did they wish to shift there? Answer है, third place family decided to reside was a cave because it was safe to protect them and their belongings from the winter and other outside animals. Fifth question है, what made the family change over to their fourth residence? What precaution did they take before building it? Once they found that one of their huts was destroyed and the cultivated field around had been trampled and destroyed. They saw huge footprints which appeared to be of an elephant herd. So they decided to build a strong hut which cannot be easily knocked down by any animal. They used 4 strong trees growing in a square 12 feet apart from one another as the foundation to build their fourth home. Do the changes in the family residence remind you of the history of man's evolution? Answer is, the 4 family homes mentioned in the poem represent the basic human survival instincts to safer, thoughtful and sophisticated ways of living, just like the evolution of humans from primitive age to current time. Next question is, how did Fritz learn about another victim, forsaken on a faraway island? Fritz knocked down an albatross as he was threatening to attack him. He found a message on a rag tied to the albatross. It was from young girl Jenny Montrose, who was forsaken on a faraway island. That's how Fritz came to know about another victim. Next question is, who was the victim and how long had she survived? The victim was a young girl, Jenny Montrose, who was forsaken on a faraway island. She had survived for 2 years before Fritz and his family discovered her. Next question is, who is included in the word everyone in everyone was amazed? Answer is, everyone includes the passengers and the crew of the British vessels who rescued the family. Last question is,
How does the adventure came to a happy end? Answer is, the adventure came to a happy end after a British vessel rescued Jenny and the family. वर्कशॉप क्वेश्चंस, इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सेपरेट वर्ड्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड विथ अ डिफरेंट मीनिंग. दे फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स. यूजिंग अ डिक्शनरी फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स. तो यहाँ पे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो सेपरेट दो अलग अलग वर्ड होते हैं जिनका कुछ और मीनिंग होता है, बट हम उनको ज्वाइन करके एक नया वर्ड बना लेते हैं और उसका मीनिंग एक थर्ड ही मीनिंग निकलता है. फर्स्ट है आर्म लोड्स. तो आर्म लोड का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ लोड अ पर्सन कैन कैरी इन वन और बोथ आर्म्स. सेकेंड है फुटप्रिंट. फुटप्रिंट का मतलब है द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय अ फुट और शू ऑन द ग्राउंड और अ सरफेस. थर्ड है ड्रिफ्टवुड. ड्रिफ्टवुड का मीनिंग है वुड विच हैज बीन कैरिड ऑन टू द शोर बाय द मोशन ऑफ द सी और अ रिवर और विच इज स्टिल फ्लोटिंग ऑन द वाटर. फोर्थ है फायरप्लेस. इसका मीनिंग है अ फ्रेम्ड ओपनिंग मेड इन अ चिमनी टू होल्ड एन ओपन फायर. फिफ्थ है क्रॉस करंट. अ करंट in a river or a sea which flows across another. It also means a situation or tendency marked by conflict with another. Sixth है spyglass. इसका मीनिंग है a small telescope. क्वेश्चन है, the following words can be used as nouns as well as verbs. Make two sentences of your own using them as a noun in one and a verb in another. So कुछ words होते हैं जिनको हम as a noun भी use करते हैं and as a verb भी use करते हैं. इस पे एक example दिया हुआ है hold. उसको as a noun हम use करते हैं she has a strong hold over her children. And as a verb use कर सकते हैं let me hold the bag for you. ऐसे ही हमें 8 वर्ड्स सॉल्व करने हैं जिनमें हमें सेंटेंसेस बनाने हैं बोथ एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब. तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं. सेकंड है वैल्यू. वैल्यू को नाउन की तरह और वर्ब की तरह हम कैसे यूज कर सकते हैं. नाउन होगा डू यू नो द वैल्यू ऑफ दिस लैंड एंड वर्ब होगा वी मस्ट वैल्यू आवर सिटीजन्स फॉर दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. देन नॉट. Not as a noun होगा there was a big knot in the wire we had bought. Verb होगा can you please knot these two ribbons together. Next है travel. उसका noun होगा train travel can be a very interesting experience. And verb होगा I travel regularly to foreign countries. Then है return. इसका noun होगा the return of the lost boy brought happiness to everyone. And इसका verb होगा please return the book to me soon. Reach. Reach as a noun होगा our goal was within reach when our leader gave up. And उसका verb होगा reach the appointed place on time please. Next है mark. As a noun होगा the tight elastic has left a mark on my arm. And उसका verb होगा the teacher asked Rohan to mark the swampy area neatly with chalk. Next है knock. Knock as a noun होगा the loud knock on the door startled me. And उसका verb होगा please knock before entering the room. Last है attack. इसका noun होगा enemy forces have made an attack on the city. And उसका verb होगा he was attacked and seriously injured by a gang of youths. Third question है given in a mixed order below are some good human attributes of the family. Pick out each from the box and write it against each line that reflects it. तो इस बॉक्स में आप देखो कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं फैमिली की, कुछ अच्छी आदतें. ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है जिस भी सेंटेंस पे जो वर्ड एप्ट बैठता हो. सो इसका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द फादर टोल्ड फ्रिट्स द गॉड्स वुड मेक एक्सीलेंट बाउल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स. ये कौन सी आदत हुई, यानी कि फ्रिट्स ने फादर को बोला कि हम
वहां पे जो जंगल में चीजें रखी हुई हैं उनसे यूजफुल चीजें बना सकते हैं। तो ये वर्ड हुआ रिसोर्सफुलनेस। सेकंड है, आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म्ड दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। यानी एलिजाबेथ को लगा कि हम वो जहां रहते हैं वो सेफ प्लेस नहीं है और उन्हें एक सेफ प्लेस पे अब शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इस हैबिट को हम क्या कहेंगे? कॉन्शियसनेस। थर्ड है, थिंकिंग अहेड ऑफ विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि फादर ने सोचा कि आने वाला टाइम जो है उसके लिए उन्हें और सेफ प्लेस की जरूरत है। इसको हम क्या कहेंगे? फोरसाइट। यानी उन्होंने पहले से पता किया, यानी उन्हें लगा कि आगे की तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए। फोर्थ सेंटेंस है, फादर टॉट द बॉयज जियोमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्रायंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स। इसका आंसर होगा नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि फादर को जो भी नॉलेज था और उसका एप्लीकेशन उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही बिलीव्ड हिज डॉटर वॉज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 years। इसका क्या मतलब है? प्रिजर्वेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स उन्होंने उम्मीद रखी और उसको कंसिस्टेंटली पकड़ के रखा कि उनकी डॉटर जो है अभी तक जिंदा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, 10 years had passed and the young boys grew to be young men and their parents were proud of them। इसका है एट्रीब्यूट फैमिली बॉन्ड्स। लास्ट सेंटेंस है, फ्रिट्ज फेल्ट दैट समवन नीडेड हिज हेल्प एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड द सेंडर। इसमें एट्रीब्यूट आएगा ह्यूमैनिटी एंड सेंसिटिविटी। राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ द रॉबिन्सन फैमिली मेड ईच ऑफ देयर होम्स। फर्स्ट होम, सेकेंड होम, थर्ड होम एंड फोर्थ होम। यानी उन्होंने ये जो 4 घर बनाए वो कैसे बनाए। आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट होम, द रॉबिन्सन फैमिलीज फर्स्ट होम was a tent on the island. They cut and spread armloads of grass to serve as their beds and soften the floor of the tent. Second answer है second home के लिए, their second home was a tree whose trunk was nearly 40 feet in diameter. The branches were long and extended straight out from the trunk, making them perfect platform for a structure. After determining the height of the lowest branch from the ground, they made a ladder. They discovered how to make candles. They also made a sledge to help them transport materials. Third home. The Robinson family's third home was a cave they carved out in the rock, abutting their camping site. They made an opening on the smooth face of the rock. Then they cut windows in the rock to allow for cross currents of air and sunlight to enter the cave. They made 4 rooms, complete with a fireplace. They hung a huge oil lamp at the top of a bamboo pole for light. This was their winter home, a place safe from the elements and a strong storage spot to protect themselves and their belongings. Fourth home. They used 4 strong trees growing in a square near one another as the foundation of their fourth home. The trees were of equal size, approximately 12 feet apart. Thus they built another safe home. They used 4 strong trees growing in a square near one another as the foundation of their fourth home. The trees were of equal size, approximately 12 feet apart. Thus they built another safe home. Expand the following ideas in a paragraph or 2. So ये 2 sentences दिए हुए हैं, हमें इनका मीनिंग बताना है, इनको एक्सप्लेन करना है 1 या 2 पैराग्राफ में। फर्स्ट सेंटेंस है, Where there is a will, there is a way. And second sentence है, Courage and resourcefulness are the key to overcome problems. So first का आंसर देखते हैं। This proverb means that if one really wants to do something, one can. If we read the biographies of great men and women like Albert Einstein, Marie Curie, Mother Teresa and Abraham Lincoln,
We will find that it is their strong will which has helped them overcome great difficulties and setbacks and helped them find a way to achieve their goals. All of us wish to achieve many things in life, but we may not succeed. When this happens, we tend to blame our luck, our circumstances, and our fate. We do not realize that the fault lies within us. Every student thinks that getting a high score in examination is beyond his or her capacity. But if a student resolves firmly to achieve his or her goal and works towards it sincerely and wholeheartedly, he or she is certain to achieve success. If one comes across any obstacle and can't climb over it, one must walk around it. There is always a way, if there is the will. And next sentence is, courage and resourcefulness are the keys to overcome problems. इसका explanation है, when we talk of courage and resourcefulness, the first person that comes to our mind is the dancer and actress Sudha Chandran. Sudha Chandran, a Bharatnatyam dancer, did not let an accident come in the way of achieving her dreams. At the age of 17, she met with an accident which resulted in the amputation of one leg below the knee. To any ordinary person, this would have meant the end of a dancing career. But Sudha took it as a challenge. With an artificial leg, she began to dance again. Today, her story is the story of inspiration for many. We have only to look around us at the cancer survivors to realize how courage can help us overcome all odds and achieve our goals in life. We must never give up hope. If one way seems too difficult, we must think of the other ways available. All we need is renewed determination and effort, and we will finally succeed.